Hey, hi guys, hope you are good. I'm Ujjwal. This is my first video on YouTube. I just want to tell you that what is the difference between the concentrators and the oxygen cylinder. As we all know that lungs are infected due to this COVID-19 and they are unable to take the atmospheric air. That's why we are using an external support. अब क्वेश्चन ये है कि किस किस को हमारा कॉन्सेंट्रेटर्स यूज करना चाहिए और किस किस को नहीं करना चाहिए। जिसकी भी कंडीशन 90 to 95 SpO2 के बीच में या अगर 80 to 85 भी जा रही है तो वो यूज कर सकते हैं। अगर जिसका 80 से नीचे आ रहा है उसको अलाउ नहीं करते डॉक्टर इसको यूज करने के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि मार्केट में कितने तरह के कॉन्सेंट्रेटर्स अवेलेबल है। दो तरह के कॉन्सेंट्रेटर्स मार्केट में अवेलेबल है। पहला आपका कॉन्टिन्यूस रेट वाला है और दूसरा आपका पल्स रेट वाला है। कॉन्टिन्यूस में ये होता है आपका कॉन्टिन्यूस फ्लो से ऑक्सीजन सप्लाई होती है, लेकिन जो पल्स रेट है उसमें यह होता है कि आपके पल्स के थ्रू जैसे जैसे आपका पल्स चलेगा उस रेट से आपको ऑक्सीजन सप्लाई होगी। कॉन्सेंट्रेटर उसके वेट पे डिपेंड नहीं करता कि मार्केट में कितने वेट का कॉन्सेंट्रेटर है, वो डिपेंड करता है कि वो कितना आउटपुट दे रहा है। जैसे हमारे पास 3 LPM, 5 LPM, 7 LPM और 10 LPM का हमारे पास कॉन्सेंट्रेटर्स मार्केट में मिलता है। बेसिकली मोस्ट कॉमन आपका 3 और 5 है। डॉक्टर्स यूजुअली प्रेफर करते हैं 3 LPM का। LPM मीन्स लीटर पर मिनट। हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई होती है पर मिनट के हिसाब से। Now I will tell you the mechanism that how the concentrators work. At first, we are having air filter, compressor, a heat exchanger, control unit, 2 cylinders. They are filled with the zeolite, a product tank, and a oxygen outlet. These are the parts of oxygen concentrator. At first, air is sucked into a compressor, then it compressed to a very high pressure. Then it passes to a heat exchanger. Then the gas enters into a cylinder A, in which there is a substance known as zeolite, which is made up of porous crystal. And as we know, oxygen having low molecular size as compared to nitrogen, because oxygen is O2 and nitrogen is N2, but we can't find the difference. But the difference is O double bond O and nitrogen is N triple bond N. So these pores allow oxygen to pass through it and stopping nitrogen. And then oxygen will be stored in product tank. After some time, cylinder A is blocked by nitrogen and the control unit activates cylinder B. And the same procedure continues. And then oxygen is collected in the product tank and reaches to patient. That's how an oxygen concentrator works.